एम्प्लॉयर वाला प्रोविडेंट फंड वाला थोड़े से बस वही डाउट्स है, उसमें कैसे कटता है, तो बस मेरे वही डाउट्स थोड़े रेज हो रहे हैं जो मुझे थोड़े। Ranjan, please keep your communication language in English only so that it will help other people also, maybe, right? Sir, now recording is there. You can open your camera. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Anjan. Yes, sir, my doubts is about taxation. Anjan and Suman, you can also open your camera, guys. Yeah, your faculty is in front of you, so that you should also About open it. payroll and taxation, sir. Okay. So what is it? Sir, about tax, sir. How much tax will be deducted from employer PF? जैसे आपने बताया था कि इतना इतना % अमाउंट हमारे EPF में करते हैं सर, so that was the main issue for me. Okay. So by the time others join, taxation is purely based on your income. Okay. So whatever in your salary slips comes on the receipt side, okay, that is taxable. Yes, sir. Mota. Okay. Certain components has either exemption, okay, or they have some rebate. So either they are fully exempted or they are partly exempted. Right? Yes, sir. HRA for that matter, अगर आपको मिलता है आपके जैसे बेसिक है, बेसिक इज नॉट एट ऑल एग्जेम्प्टेड, मतलब वो जितना भी अमाउंट बेसिक में लिखा है पूरा का पूरा टैक्सेबल है. ठीक है. HRA is exempted based on certain things. Now what is that thing? That thing is HRA and basic का रेशियो. आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का कॉस्ट ऑफ लिविंग, ओके, and then there is a percentage calculation as to how much is deducted, how many percentage of HRA is exempted and how many percentage of HRA is taxable. मतलब ऐसा हो सकता है कि आप की कंपनी आपको 50% बेसिक और 50% HRA देती है. 1 लाख रुपया आपका नेट मंथली ग्रॉस है, ठीक है, उसमें 50,000 बेसिक और 50,000 HRA. Yes, sir. And it is assumed that 50,000 पूरा का पूरा मुझे exempted जाएगा तो नहीं हो. ठीक है. कितना exempt होगा? It depends on your basic. So 40% of basic is considered to be exempted. Okay. तो 20,000 रुपया है, उसके ऊपर शायद आपको टैक्स नहीं लगेगा. बाकी का 30,000 दो HRA, it will be taxable. Yes. So your total taxable income out of 1 lakh, it becomes 80,000 rupees. Yes, sir. ठीक है. 20,000 में आपको exemption मिल सकता है. Okay. Now कब लगेगा? जब पूरे साल की आपकी इनकम 80 जोड़ते जाएंगे, पूरे साल के अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप टैक्स की ब्रैकेट में आते हो. ठीक है. तो वैसे अपना 12 लाख होता है, अगर महीने का 1 लाख रुपया है तो 12 लाख रुपया साल का क्रॉस हुआ, उसमें से 2,40,000 एग्जम्पशन निकाल देते हैं HRA का, तो 9,60,000 रुपया, 9 और 1 10 12, 960 इज योर टैक्सेबल इनकम. ओके सर. ठीक है. अब इस 960 में से आपने अगर कुछ बचाया है, इस 960 में से अगर आपने कुछ बचाया है, वो सेक्शन 80C में कवर होगा. उसका मैक्सिमम कैपिंग है 1.5 लाख रुपया. तो मान लेते हैं कि 1,50,000 रुपया आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया. Yes, किसान विकास पत्र, NSC, कोई इंश्योरेंस प्लान लिया आपने, कोई SIP किया है, ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, या न्यू नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है,
ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो 1,50,000 रुपए तक आपको आपके ग्रॉस में से कम हो जाएगा। और दिस ऑल्सो इंक्लूड्स योर ओन पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय का पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, आप अगर कोई होम लोन भर रहे हैं तो उस होम लोन का प्रिंसिपल साल भर का, और आपकी जो भी सेविंग्स है, ये सब मिला के 1,50,000 रुपए तक अगर होता है तो आपके ग्रॉस में से डिडक्ट हो जाएगा। Yes. तो मान लेते हैं कि आपने 1,50,000 अलग अलग जगह से इन्वेस्ट करके आपका पीएफ, होम लोन, ये सब मिला के 1,50,000 होता है। तो 960 माइनस 1,50,000 अभी हो गया अपने पास 8,10, Yes, sir. है ना, 8,10,000। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास एजिंग पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन, Yes. एजिंग पेरेंट्स हैं, उनके मेडिकल के लिए आपने कुछ लिया है तो उसका जो प्रीमियम है वो भी अप टू 25,000 रुपीज आपको आपके उसमें से डिबिट हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। तो जैसे अलग अलग कैटेगरीज में सेक्शन 80C, 80D, 10, 10D, देन 80G, आई थिंक किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया है ना, किसी एनजीओ को डोनेट किया, ये सारे कंपोनेंट्स आपके ग्रॉस में से कम होते जाएंगे और आखिर में जो अमाउंट बचेगा, अगर वो अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो आप टैक्स की ब्रैकेट में आते हैं। करंटली अप टू 5 लाख रुपीज इट इज एग्जम्प्टेड, मतलब दो आपका टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपया है, लेकिन अगर 2,50,000 से लेके 4,99,000 तक अगर है तो आपको टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही 5 लाख एक हो जाएगा, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के ऊपर 5% टैक्स लग जाएगा। 5 से 10 पे 10%, 10 to 20, 20%, और उसके ऊपर जाएगा तो 30% फ्लैट। Yes, sir. तो दिस इज हाउ योर एंटायर टैक्स इज कैलकुलेटेड। Yes, sir. Am I able to answer your question? Yes, sir. बाकी जितना कमाओगे उतने में टैक्स लगेगा बाबा। Yes, sir. और टैक्स तो अच्छी बात है। Sir, my one इसका मतलब, so there, हाँ if जी, employer PF deduction is 12% and employer is 13%. So how the HR can divide in 12%? We have to fix in the in pension scheme of the employee and any other activities. So how the HR can fix that? कम अगेन फिर से बोलिए एक बार। सर जैसे 13% में, सर जैसे 12 एंड 13%, 12% आपका एम्प्लॉय का अमाउंट कट पीएफ है सपोज, और 13% करेक्ट एम्प्लॉयर आपको देता है, तो करेक्ट। उसमें कंपनी जैसे एचआर है उसमें कैसे फंक्शन करते हैं कि जब एज एन एचआर रिटायर होता है या ग्रेचुटी देनी होती है उसको, तो वो कैसे आगे मैनेज करते हैं उसमें एचआर? ओके, ग्रेजुटी के ऊपर हम बात करेंगे जब हम पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट पढ़ेंगे तब। यस सर। ठीक है, लेकिन बाकी जो दो सवाल है आपका, पीएफ डिडक्शन 12% सीधा आपका पीएफ फंड में जाता है। यस सर। ठीक है, ईपीएस जो है, ईपीएफ या ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो भविष्य निधि संगठन है, आपका जो डिडक्शन है वो सीधा पीएफ फंड में चला जाता है। यस सर। सीधा प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज 12+1। यस। जो 1 है, दैट 1 इज 0.5% इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। हाउ मच सर? ठीक है, तो 0.5%, अच्छा 1.5%। 0.5% is administrative charges. Yes sir. 0.5% is idli, that is employees this EDLI, it is called idli. It is basically your in case of any eventuality, अगर कुछ दुर्घटना घट जाती है तो उस केस में कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक फंड का जरूरत पड़ेगा, तो वो जो सबसे कंट्रीब्यूशन है, दैट कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस, 0.5%। so that 0.5% एडमिनिस्ट्रेशन, 0.5% EDLI, और बाकी का जो 12% है उसमें से 3.67, 12% का 3.67 it goes to employees pension scheme,
EPS Yes, sir. और 8.33 goes to EPF. EPF. ओके, मतलब आपके प्रोविडेंट फंड में 20.33% जाता है, 12% आपका, Yes, sir. और एम्प्लॉयर के 12 में से 8.33, Yes, sir. और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 3.67 इट गोज टू पेंशन स्कीम. Function, sir. बाकी का जो 1% इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, तो उसमें आपको न मिलना है ना देना है, Yes, sir. वो कंपनी का एक्सपेंडिचर है आपके बिहाफ पे. ठीक है, पीएफ का पैसा पूरा का पूरा आपको मिल सकता है आप जब भी चाहें तब. Yes, sir. जो कंट्रीब्यूशन पेंशन में जाता है, Yes, sir. अगर 10 साल मतलब 9.5 साल, 9 साल और 240 दिन के ऊपर अगर आपका कंटिन्यू सर्विस हो गया, तो आपका पेंशन जो है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते. Yes, sir. वो सुपर एन्युएशन के बाद में ही आपको मिलेगा. Yes, sir. है ना, 9 साल 240 दिन. तो अगर एक कंटिन्यूस सर्विस है तो आप पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, Yes, sir. वो पेंशन फंड में पड़ा रहेगा. और जब आप 58 के हो जाएंगे, उसके बाद उसमें से जो भी कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसमें से आपका पेंशन आना शुरू हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, पीएफ आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो. Yes, sir. चालू जॉब में भी आप चाहें तो आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं. Yes, sir. कुछ क्राइटेरिया जो कंडीशंस है उसके बिहार पे आप चाहे तो आपका पैसा उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पेंशन आप विड्रॉ नहीं कर सकते. पेंशन एक ही क्राइटेरिया है, आपका 10 साल का कंटिन्यू सर्विस नहीं होना चाहिए. Yes, sir. ओके, अब दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर आपका यूएन नंबर कॉमन है, Yes, sir. यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर कॉमन है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन, Yes, sir. तो आप जब भी जॉब चेंज करेंगे आपके सारे अकाउंट लिंक होते जाएंगे. ओके, तो कंटिन्यूस सर्विस का एक पैटर्न बन जाएगा और उस केस में आप पेंशन विड्रॉ नहीं कर पाएंगे. हाँ सुमन. सर आई वांटेड टू आस्क, ये यूएएन नंबर पैन नंबर ही है ना? नहीं नहीं नहीं, पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन इज फॉर टैक्सेशन, राइट. but UN is universal account number. This is exclusive for provident fund. Right. So, So if you have an income above, like how much amount, like 5 lakh or 6 lakh, then only? No. PAN, PAN is now it is mandatory for everybody, whatever is your income, Right. irrespective of your income scheme level. Permanent account number is mandatory because it is used to track your financial transactions. This is new for me, sir, because I have never been given, like I have worked with some of the good organizations also, like Lifecell and APCO. Right. One is multinational and national, and other one like there is like Byju's also, but they have never provided this UAN number. Rather, they Okay. just took PAN number. So like, is it mandatory for every organization to provide it? It is mandatory for every individual to have it. Like it is organization's responsibility? Yes. So as if you get salary slip. Yes, sir. Right now I am part-time employed. So there is no Okay. regular source of income. That is something that is credited into account on and off. So this is online platform. So for part-time or full-time, like it is not a monthly income. Whatever you work, you generate the income. So over here, I'm not concerned. But because I have worked full-time, 8 to 9 hours shift over there. So it was never provided to me over there. Okay. So Was provident fund was deducted? yes, sir. My first job was in 2015. So PF was deducted during that time. In Byju's, it was deducted, but this UN number was never provided. Okay. Now you can go back and check those salary slips of both these previous organizations where your PF was deducted. In that salary slip, they must have mentioned the UN number. See, Right. if you have not given, system will generate automatically. Because without UN, PF will not function.
And sir, one more thing, like, for example, I was a former employee with other organizations before joining this organization. That was my last one, Byju's. So that must have generated because the salary was little bit higher. So has it auto picked my UAN number from my first employment, like PAN, from my PAN details and everything, or the new UAN was generated? If you have not provided, new might have been generated. Okay, this is which year? Now it Sir, does not happen. first- Now system picks automatically. Sir, my first employment was in 2015, and the last, like from the current, the last job was in 2020 to 21. Okay, so in that case, system would have generated UAN number, because without UAN number, it will not process the provident fund. So you can go back and check with Byju's. You can ask them what was your UAN number. They will definitely tell you. And next time, whenever you get into an employment, you provide that UAN number so that your accounts are linked. Also, To sir, access your provident fund account, also you need UAN number. one more thing, sir, like I have been, it's almost a year, but it was a part-time employment since I moved after a marriage to a new state. So there were less opportunities. So for that circumstances, I had to take employment as a part-time educator and trainer. So what happened over here is the income is not stable, and as much as that was there, I was learning last time, earning. So I have worked as a senior admin officer. So a part of it was taking out preliminary HR tasks like screening of documents, taking first round of interviews or anything. So if I'm applying for HR manager or any kind of interview, so if they are asking me to provide me salary slip from last 1 year, I don't have any such kind of employment. So what should I be mentioning to them? No. See, there are ways and means to get it done. One is, you can always say the way you have confronted to me that for past 1 year I am into a part-time employment, so there is no structured salary slip as such, but this is my income for the year. You can ask your employer to give you an income statement on a company letterhead that this is my annual earning in whatever organization you are working in, and So that can the help you as a employer proof has- of earning. In the first 3 months, they have already clarified that we don't mind you working in any other organization like moonlighting, but we won't be able to give you any kind of experience letter or appointment letter. This is Fair kind enough. of open-ended. So Okay. yeah, so this is In the that scenario. case, if whatever amount they are paying, if it is going into your bank account, if it is paid by transaction, NEFT or by check, then you can use those bank statements to testify or justify that this is the income that you are generating from XYZ employment. But sir, let's give you an example, like from Byju's, I was earning 70,000. Over here, it is almost like a 10% of it, or not 10, I would say, at least like 20% or 25% of it currently, because over there I was working for 12 hours. Here I'm working for 4 to 5 hours. So equivalently, it is fine for me. But if I'm working for 8 hours, so my last salary will be considered as my, like the current salary, Correct. whatever they will be In offering. that case, you can always tell that when I was working, when I was in permanent employment, this is my earning. So say 70,000 was my salary. Because of marriage, getting and shifting from one place to another place, I could not get an opportunity. So to continue with my learning and knowledge sharing, I am doing it as a part-time basis. But this was my last earning, which I request you to protect it. So if the employer is, if the employer is genuine, if the employer understands, they will definitely protect that whatever was your last CTC, or they'll try to meet or exceed that whatever was your last earning, understanding the situation. Right. Okay, so you can So always that's tell that. one of the biggest concerns, sir. Like in No. Madhya Pradesh, like the job employment is too less for even for HR. They are just giving the bare minimum. So when you are already earning a very less amount, so how you are going to justify in front of an employer? So that Correct. is So the there you concern. can always justify that this was my last CTC when I was working as a full-time employee. Okay, because of the situations, as I moved from one city to another city, as I got married, I had to leave the job. As of now, to get into a new place, this was the opportunity I had, so I joined it. Okay, but I would request to protect my
previous regular income, whatever it was. So if the employer is genuine, if they understand, they will definitely try to protect whatever was your last earning. Right. Ultimately, it is the skill, how you present yourself, how you negotiate yourself. That is important. So the role is of HR. I was in admin, so that is what I am. Even I discussed with ma'am also that how I am going to perform the duties after 6 months of this course. Like it is just a bit of a MBA. Even MBA being a practical knowledge is not far like 100% a full shot to get a good secure job. You have to start from very basic. So how I am going to put myself forward as a HR manager, because there are various roles and responsibilities. They themselves contacted me via LinkedIn. So what kind of roles they might be expecting from me, or what kind of questions I have to face? Like that is a food industry. They are a food products they are dealing with. So they are looking for HR. It all depends how complicated that organization is, okay, or what are the challenges they are facing. When we say manager HR, the role is a generalistic role, which includes hire to fire everything. So to recruit, retain, recruit, train, retain, and separation. These are the basic Right. 4 activities when we come in an HR manager kind of role. When we say recruit, how to hire, किसको लेना है, कहाँ मिल सकता है, फूड इंडस्ट्री है तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा, आपके सेक्टर में से लेना पड़ेगा. सो एज ए मैनेजर एचआर यू मस्ट नो ऐसे और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जहां से मुझे टैलेंट मिल सकता है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इन लोगों के पास से क्या काम कराना है. सो दैट बिकम्स द रिक्रूटमेंट पार्ट. इफ आई गेट समवन, व्हाट आर द इनपुट आई नीड टू गिव. वो बंदा कैसा होना चाहिए, है ना. शादी का इश्तेहार देते हैं ना, जी. तो लड़की सुंदर, पढ़ी लिखी, अच्छी, संस्कारी, अच्छे घर की, ये सब हम लिखते हैं उसमें. जी. That is Sir, all their competencies. And sir, another thing is ATS also, sir. Like मैंने ये है जब भी देखा होता है उनके LinkedIn में recruitments में कुछ तो होता है, जैसे we have worked in teams or some kind of softwares and everything, जो एक specific organization का. लेकिन कुछ पूछते हैं आपको ATS पे काम करना आता है, आपको जैसे आपके पास कुछ already जैसे Indeed का कुछ generate होता होगा कि आप उसके यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, कुछ ऐसा आपके पास ऑलरेडी है, ऐसा कुछ सर है क्या, रहता है? कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी जैसे कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन उन्होंने यूज किया एटीएस, तो आप उनको ऑलवेज पूछ सकते हो कि एटीएस मतलब क्या है. वो आपको बता कि भाई एक ऐसा पोर्टल है, जॉब पोर्टल है जहाँ पे हमको रिज्यूम मिल सकते हैं. So then you can always come, you can always go back and tell them that ATS use नहीं किया है, but I've used Naukri, I've used LinkedIn. So I'm sure they will be similar. सीखना है तो I can always learn that. But I've already worked on such job portals. I've already worked on LinkedIn. I've already worked on Indeed. जहाँ फ्री पॉसिबल है वहाँ फ्री पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन सब जगह नहीं है, कुछ लिमिटेशंस होंगे. So whatever is to be learned, I can learn. But I have already worked on these platforms or similar, apps. Right. So that way you can always, put forth your knowledge. Whatever you know, you can always share that. Right. So Thank when you. you say it's a managerial role, everything will come in. The complicated part is the compliance. Okay, because if it is a food industry, the complications will be on procuring the license, food license, then ensuring hygiene, ensuring good management practices, GMP बोलते हैं उसको, जो pharma में होता है. So doesn't it come under QC and QA then? No, not necessary. Sometimes when it comes to compliance, compliance is almost with HR. When you talk about statutory compliances, it is generally with HR. So health and safety, it may be a separate department, but still there are people employed. Your product would be in the market. So when you're deploying people on the lines, you have to ensure that they are healthy, and they are not contaminated, they are not ill, they are not sick. Otherwise, the same thing will go in the product also. Right. Okay. So such compliances HR may have to look into. Pollution control sometimes. Then licensing with local people. आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ के कुछ प्रीमियम लोग हैं, उनके साथ में लाइसेंसिंग करना, बातचीत करना, उनके पास रिक्वायरमेंट समझना, उनके साथ में एक रेपो रखना. All this also comes under the role of an HR manager. Then within the plant discipline,
जो बना रहा है वही खा भी रहा है वहीं खड़े खड़े. Now it's an indisciplined matter. You know, there can be a taster, but then the one who is preparing something, an edible item, वही लाइन पे खड़े खड़े खा भी रहा है. Suppose it's a wafer and it's a manual process. Right, sir. तो वही लाइन पे चल रहा है, आपने उसमें थोड़ा खाना शुरू कर दिया. Now it is an indisciplined matter. So such indisciplinary issues also is taken care by HR. Sir, as just said that lodging with local people, does it mean that just getting in daily to like regular interactions with the workers who are from local base? Does it include that? Yeah, it is. It's not only workers, contractors, local agencies, government agencies, all those who are the stakeholder, whosoever is helping you to operate your organization. Okay, you have to liaison with them. Pollution control, your local factory inspector, health officer, health inspector, factory medical officers, lot of people, whosoever is interacting. Sometimes Sir, police, sometimes panchayat. So is that sometimes a job of local- HR manager, sir? I'm so sorry, sir. Yeah. Your voice, my voice is it a my internet problem? Of course, it is anything which is related to your plant operation is HR. Anything outside the periphery is HR. Right, sir. Got it. Thank you, sir. That comes in. See, it will come. It will be part of your role gradually. ऐसा नहीं कि पहले दिन से बोल देंगे आपको. But this is expected. अगर कोई इश्यू होगा, अगर कोई compliance है, अगर कोई legal matter है, कोई concern है, so the first point to be contacted is HR. That HR should look into all such, areas of concern, whether it is inside or outside. So whenever there is interaction with people, you can always accompany your seniors. You can always go with your senior. You can always take the help of your management, what to do, how to do. Okay, but then you will be the first person to speak to. Got it, sir. Thank you. Right. So, Anjana, I answer your question, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, you have covered very softer aspects of HR so far, like you have done recruitment, you have learned performance appraisal also, right? You have learned training and development, what is the training process, different models of learning. Similarly, there is another area in HR, as I was talking with Suman, she had asked a lot of questions. So one area is compliance. Okay. To operate any organization, it has to run by rules and regulations. कुछ चीजें हैं जो रूल्स में है, कुछ चीजें जो डोंट्स में है, करना चाहिए नहीं भी करना चाहिए. So what is allowed, what is not allowed, how it is to be done, what is to be done, what are the things that guides factory operations. All these things are governed by law. Okay. So Indian Constitution, Bharat ka Samvidhan, it is the main document that governs the entire country. Okay. So on that backdrop, on the basis of Indian Constitution, there are enactments to ensure that all the sectors, okay, are functioning properly with least disruptions. Okay. आप न्यूज Yes, sir. सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो कई बार आता है कि ईडी ने छापे मारे, ईडी है ना. Yes, sir. विजय माल्या की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली, जी, sir. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, या आयकर विभाग ने छापा मारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड हुआ, है ना. अभी अंजन इतना हैड ए क्वेश्चन के टैक्स वैक्स कैसे डिडक्ट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा. नाउ इनकम टैक्स एक्ट 1960, आई थिंक, एक ऐसा कानून है जिसके थ्रू पूरे हिंदुस्तान में जो भी आदमी कमा रहा है, जो भी, उसकी आय के हिसाब से उसको टैक्स भरना चाहिए. ये कानून है. अगर ये कानून नहीं होता,
तो आज हमको कुछ टैक्स वैक्स देना नहीं पड़ता। अगर एक कानून एक्सप्लिसिट नहीं होता तो लोग अपनी अपनी मर्जी से करते हैं। पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी विजिलेंट हो गया, काफी कुछ ऑनलाइन हो गया, तो अब इससे बच पाना बहुत मुश्किल है ना। आपका हर ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं ट्रेस होता है, 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का हो। और कभी कुछ एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन अगर है तो आप बताएं या ना बताएं, वो इंफॉर्मेशन आईटी के पास आएगा और आईटी आपको उसका नोटिस भेजता है या सवाल उठाएगा, है ना। भाई ये ट्रांजैक्शन क्यों है, या ये पैसा आपके खाते में कहां से आया, XYZ, या आपका इनकम इतना था लेकिन आपने टैक्स कम भरा। पहले क्या होता था, पहले ये सब चीजें छुप जाती थी क्योंकि सब मैनुअल था, पता नहीं चलता। कुछ हिसाब सामने आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फॉर्म 16 भरना नहीं भरना जरूरी नहीं है। अभी आप बैंक से लोन लेते हैं, अगर उसका लोन डिफॉल्ट होता है, आपका क्रेडिट स्कोर गड़बड़ हो जाता है ना, सिबिल रेटिंग बोलते हैं। सिबिल अच्छा नहीं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, बैंक आपको अच्छा क्रेडिट नहीं देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So this all is governed by Income Tax Act. नहीं तो 140 करोड़ की आबादी में अगर 50% लोग कमा रहे हैं तो 60-70 करोड़ लोगों के ऊपर नजर रखना मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। साथ में कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू सरकार भी एक रेवेन्यू जनरेट कर सके, है ना। अभी आप देखो एक कैंपेन चल रहा है, जैसे कैंपेन मेरा बिल मेरा अधिकार, और 1 करोड़ रुपए तक का गिफ्ट सरकार की तरफ से आपको मिल सकता है। उसका वेबसाइट है, पोर्टल है, ऐप है, उसमें आप आपका जीएसटी वाला बिल अपलोड करो एंड देन यू कैन बी वन ऑफ द लकी विनर। प्राइज मनी इज अप टू 1 करोड़। नाउ द पर्पज ऑफ दिस इज, ऑलरेडी देयर इज एन एक्ट, जीएसटी है ना। पिछले 3-4 साल से जीएसटी से एप्लीकेबल। पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, सब इकट्ठा करके सिंगल एक नियम बना दिया, एक कानून बना दिया। व्हाई? टू गवर्न द ट्रांजैक्शंस, टू मॉनिटर द ट्रेडिंग। अगर कुछ सामान बन रहा है तो बिक भी रहा है, अगर बिक रहा है तो उसके ऊपर प्रॉफिट भी है, अगर प्रॉफिट है तो उसके ऊपर इनकम है, इनकम है तो टैक्स है। तो इस पूरी ट्रेल को ट्रेस करने के लिए there is a GST council that does it. I'm giving all this insight so that you understand the importance of judiciary, कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, दंडपालिका। Similarly, to govern organizations, 1990s में ग्लोबलाइजेशन हो गया, दुनिया की कंट्रीज से लोग इंडिया में आके प्लांट सेटअप करने लगे। They started doing joint ventures, they started merging, they started acquiring. कोई अमेरिका की कंपनी आके इंडिया की कंपनी खरीद लेती है, कोई इंडियन कंपनी अमेरिकन कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर कर लेती है। कल उठ के मुझे मन होता है वोकल फॉर लोकल, you want to have a startup, you want to set up your own industry. So in all these cases, how to control setting up a factory, starting up a service, ensuring that the condition of people working in these industries are okay, they are taken care of, they are paid well, their basic requirement has been fulfilled, they are not exploited, they are paid appropriately. All these were the concern for the government or whosoever was running the country. So to look after all these issues with reference to any organization, industry segment, establishment, there are various laws applicable to these organizations. Put together, we call it labor laws
and implementation of these law to respective organization is statutory compliance. Okay, मतलब कुछ ऐसे कायदे कानून के नियम जिनको पालन करना अनिवार्य है. You can't operate any organization, any industry, any factory without these rules and regulations. So all such rules and regulations, they are called labor laws. Okay. And for different purpose, there are different acts, and that act specific state government form rules also. Okay, so next couple of classes, we will try to understand these acts, what these acts says, why it is important, what the objective and purpose of these acts. Okay, what are the different forms and formats which are necessary to have. Okay, how these are audited. So all these things, we will try to cover some of these, the most necessary labor laws. We will have some assignments also, so that you also try to explore what these acts says. Sir, now there is new bill was introduced in the month of August, BNS bill in IR, industrial relation. In industrial relation, there was new bill was introduced by the Parliament of India. That is BNS. Okay. So I read yesterday about the BNS bill. Which act? BNS bill. What does it stands for? So BNS bill is Bharatiya Nyaya Sahitya bill, I think, and it is about that you cannot give employment, give fake promise to the woman or any other person for the job. Okay, I'm not aware. I need to read this. BNS, na? Yes, BNS bill. New bill was introduced by Parliament. I need to read that. I have not heard. Yes, you cannot promise any woman for a job. Mm-hmm. So the strict action will be taken by the government of India. Okay. Yes. So I'll try to explore what it is, and then in Yes. subsequent class perhaps we can discuss. Yes, sir. So as we are talking, that compliance is implementation of these rules or these acts in your company. Okay. So for everything, there is a mention in these acts. Like when I say factory, what is factory? When I say employee, what does employee mean? When I say workman, who is a workman? When I say bonus, who will be paid? How much is to be paid? You ask gratuity. So who is entitled for gratuity? How much gratuity is payable? Who all can deploy labors? Contract labor आपके यहाँ चलता होगा, आप जहाँ भी काम कर रहे हो. Okay, so what is the process to deploy a labor? कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? Okay, so all these things are defined in these specific acts or laws, और वो implement हो रहा है कि नहीं, that is called compliance. And to ensure that it is complied, it is HR who is generally interested upon this responsibility to look after statutory compliances. संवैधानिक जो भी है जरूरी कायदा किए तौर पे वो जनरली एचआर के पास में इसका एक रोल है. Okay, so there is a softer aspect. This is a very critical aspect of HR, but
This is the only area which is black and white. बाकी सब जगह कॉन्सेप्ट है, मॉडल हो सकते हैं, थियरी हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, या जो लिखा है वही करना है. अगर कोई बंदा गलती करता है तो वो उसने जो भी किया वो गलती है कि नहीं, पहला तो वो लिखा है. और अगर वो गलती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए वो भी इसमें लिखा है. कैसे सजा देनी चाहिए वो भी इसमें लिखा है. कितनी सजा होनी चाहिए वो भी इसमें लिखा है. सो एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट. एज एन HR प्रोफेशनल, एज एन HR मैनेजर, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कौन से एक्ट में है. That much you should know. Don't rely on your memory. Always refer to these acts. तो सब याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी जो हमको पता होनी चाहिए कि भाई अगर ऐसा मामला आता है तो कौन सा एक्ट रेफर करना है. बोनस कैलकुलेशन करना है तो कौन सा एक्ट करेंगे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट रेफर करेंगे. ग्रेजुटी एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट रेफर करेंगे. कितना पैसा मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट रेफर करेंगे, है ना. फैक्ट्री चलानी है, लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देना है, तो अपॉइंटमेंट लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रेफर करेंगे. So only that much information you must have, that okay, this is what I need. Then you can always go back and refer those acts, those laws for more detailed activities. Okay. So before 2019 and after 2019, there is small change in compliance and acts and labor laws. Before 2019, there were around 49 different acts to industries. आप किसी भी सेटअप में हो, आप किसी भी स्ट्रक्चर में हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, whether it is a manufacturing or service, मोटा मोटा 40 से 50 एक्ट एप्लीकेबल है फ्रॉम HR perspective. Okay. And there is one document, it is called legal register. This is for the benefit of both of you, and if at all those will be referring the recordings. Legal register. This is one document. It carries all the compliance related details. कौन सा एक्ट, उसका कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, उसमें क्या करना चाहिए और हम कंप्लाई करते हैं कि नहीं करते. ओके, इट्स अ चेक शीट काइंड ऑफ थिंग्स. दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर सम सर्टिफिकेशन आल्सो. So in subsequent classes, I'll try to put up, that legal register so that you can always refer to that. But after 2019, as government always focused on ease of doing business, startup, vocal for local, and otherwise also, government try to bring some reforms in industrial sector also, and they amalgamated these 49 various acts in 4 codes. तो जो 50 एक्ट थे अलग अलग, उसको इकट्ठा करके 4 कोड बना दिए. The Code on Wages 2019. This talks about payment and payment related concerns. Industrial Relation Code 2020. This talks about how to ensure smooth industrial relations, IR. Code on Social Security 2020. This talks about post-retirement benefits. Okay, or after separation benefits. That is your social security, your health, medical, everything.
and Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020. तो जो 50 अलग अलग कायदे थे उसको इकट्ठा करके 4 कोड बना दिए, कोड ऑन वेजेस, IR कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020. इसमें जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, आई थिंक इसका अभी गैजेट नहीं हुआ है. बाकी सारे के सारे जो एक्ट हैं, they are enacted, they have been approved by parliament, both the houses, and mandated by the president also. So this is the process. कोई भी कानून होगा अगर बनाना है तो संसद में उसके ऊपर चर्चा होती है, स्टैंडिंग कमेटी will discuss, then it will go to floor will discuss whatever pros and cons, corrections, then it is formed as an act, goes to president for endorsement. President उसको enact कर देंगे, approve कर देंगे, बाद में गवर्नमेंट उसको गैजेट करेगा, and then it is applicable to the industries. Okay, so up to gazette all the process have been done, only gazette is to be declared. Okay, so then once the gazette is declared, then all these 4 codes will be applicable and implemented. So आप जहां भी जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, एरिया इन द सेंस ज्योग्राफी, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आप अभी हैं हिंदुस्तान के, तो वहां का जो लोकल लेबर ऑफिस है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके थ्रू कई सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस ऑन वेरियस लेबर कोड्स ऑर्गेनाइज होते हैं कि नया एक्ट कौन सा है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या एप्लीकेबिलिटी. सो 4 कोड्स, द कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड. Now what all includes, कौन कौन से एक्ट इकट्ठे होके ये कोड बन गए हैं. So when you talk about the code on wages 2019, there are 4 acts: Payment of Wages Act, the Minimum Wages Act, the Payment of Bonus Act and Equal Remuneration Act. ये 4 कानून इकट्ठा करके एक कोड ऑन वेजेस बना दिया. ओके, वेज मतलब आपका जो अर्निंग है वो. ठीक है, जनरली हम 2 टर्म यूज करते हैं, हमने अपने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, सैलरी एंड वेज, है ना. सैलरी इज अर्निंग और इनकम पेड इन लंप सम आफ्टर 25, 26, 30 days on monthly basis, and wage is paid to workmen on daily basis or on piece rate basis. जितना काम करोगे, जितना प्रोडक्ट बनाओगे, उसके हिसाब से पैसा मिलेगा. ठीक है ना. सो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ये 4 एक्ट इकट्ठा करके द कोड ऑन वेजेस. द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, IR, 3 एक्ट इकट्ठे कर दिए. द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. ID Act जो है 1947, it is a very important act as far as industrial relation are concerned. तो किसी भी प्लांट को बंद करने में, आदमी को निकालने में, रिटर्न करने में, ले ऑफ करने में डिस्प्यूट है, अगर लोगों के बीच में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, यूनियन और एम्प्लॉय के बीच में, in that case that entire dispute is governed by Industrial Dispute Act 1947. So ये 3 एक्ट इकट्ठा करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया है. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, it is Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, ESIC, Employees State Insurance Act 1948, the Payment of Gratuity Act 1972, Maternity Benefit Act 1961 and Employees Compensation Act 1923. जो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट है, इसका पुराना नाम था वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट. देन दे अमेंडेड द नेम ऑफ द एक्ट एज एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट, क्योंकि वर्कमैन तो वर्क वुमन भी हो सकता है, तो उसको एप्लीकेबल नहीं है क्या. देयर वाज सच डिबेट एंड देन द नेम वाज चेंज्ड टू, from Workmen Compensation Act, it was made to Employees Compensation Act. And the bigger one, Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020. Major 4 acts, the Factories Act 1948, Mines Act 1952,
Contract Labor Act 1970 and Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Condition of Services Act 1979. इसके अलावा सिनेमा, बिल्डिंग, प्लांटेशन, जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, बीडी एंड सिगार वर्कर और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया. अर्लियर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इट वाज इन फैक्ट्रीज एक्ट. पहले फैक्ट्री एक्ट का हिस्सा था, अभी फैक्ट्री एक्ट इस कोड का हिस्सा हो गया. द रीजन ऑफ अमलगमेशन इज हर एक्ट में अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन था जो कंफ्यूज करता था लोगों को. So it put together so that definition can remain common in across acts, implementation आसान हो जाए, understanding आसान. Okay, so let us try to understand some of the acts. We begin with the Factories Act 1948. Okay, this is the very first or important act. This date June 23 because of my previous class. Okay. Now, if you have any question by now, you can ask. Not yet, sir. Okay. Now, any act, कोई भी कानून किसी वजह से बनता है ना. रोड पे खड़े होकर उस सिग्नल लगाता है क्योंकि हम लोग ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते, है ना. So any act, any law is to regulate something. Indian Penal Code, IPC, दफा 302, ताजीरात हिंद जेरे दफा 302, सजाए मौत, है ना. 420 धोखाधड़ी का मामला है. ये सारे कानून किसी न किसी वजह से बने, या तो लोगों को गलत काम करने से रोकने के लिए या अच्छा करने को प्रोत्साहित करने के लिए, either way. But generally the objective is always positive, but it is always based on punishment. है ना. सफाई रखनी चाहिए, ये एक इच्छा है, लेकिन जब तक थूकने में 500 का फाइन नहीं लगेगा तब तक कोई सफाई रखेगा नहीं. So the implementation of act is not to punish but to ensure clean places. So similarly, every act has an objective. The objective of Factories Act is to secure working conditions in the factory. मतलब जो काम करने की परिस्थितियां हैं वो कैसी हो. To ensure the basic minimum requirement for health, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, या अगर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होती है तो उसके लिए क्या प्रोविजन हो सकते हैं. टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, वहां जो काम कर रहे हैं उन वर्कर्स का वेलफेयर, मतलब उनकी देखभाल, रख रखाव. और टू रेगुलेट द वर्किंग आवर्स, लीव, हॉलीडे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वुमन एंड यंग पर्सन. इसका जरूरत क्यों पड़ा होगा? व्हाई दिस एक्ट 1947-48 में इसको लाना पड़ा? सर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा सर इस पे. बोलिए. सर जैसे फिरोजाबाद एक जगह यूपी के अंदर जो बैंगल्स के लिए बहुत फेमस माना जाता है. करेक्ट. है ना. तो वहां पे जब कई चीजें चिल्ड्रंस वगैरह जैसे अभी बिल्कुल छोटे छोटे 10 to 9 मतलब कहते हैं ना कि उनके हाथ में सफाई, तो वो क्या करते बैंगल्स बनाते थे. तो उसमें क्या होता था कि
या वो ब्लाइंड्स हो जाते थे या तो उनके कुछ लंग्स में प्रॉब्लम आती थी, तो क्या करती थी कंपनियां, उनको निकाल देती थी और उनकी जगह नए बंदे रख लेती थी। तो जब ये चीज गवर्नमेंट के कानों तक पहुंची, ये बात कि इससे कई बच्चे मर भी रहे हैं और ये सब हो रहा है, तो इन्होंने ये एक्ट लाके रख दिया कि जिससे कि एक फैक्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल हो जाए कि आप एक मिनिमम एज ग्रुप डिसाइड करो कि 18 से बिलो 18 जितने भी हैं उन बच्चों को आप हायर ही नहीं करोगे किसी भी कंडीशन के अंदर। तो ये एक एक्ट जो लगा है, तब से ये फैक्ट्रीज के अंदर एक डर बैठ गया है कि अगर हम इस तरह का एक्ट लाते हैं, अगर हम किसी बच्चे को फोर्सफुली लाते हैं तो हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। परफेक्ट, बिल्कुल सही। यस सर। जब ये एक्ट लागू हुआ उसके पहले हिंदुस्तान में जो मिल चलते थे, जो फैक्ट्री चलते थे, जैसे आपने बोला फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां फेमस है, तो कांच को पिघलाना, उसका बैंगल बनाना, शेप बनाना, मोल्ड, तो फ्यूम्स है, उससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, सांस की बीमारी हो सकती है, हीट है, फ्लेयर है, आंख जा सकता है, जैसे आपने बताया। तो ऐसे अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग ऑक्यूपेशनल इश्यूज थे। किसी को भी काम पे रख लिया, किसी से कुछ भी काम करा रहे हैं, है ना। पुराने पिक्चरों में आपने देखा होगा, केजीएफ देखा है, केजीएफ sir. 1-2 यस सर, देखा है। देखा है ना। यस सर। उसमें जो मजदूरों की हालत थी, सो ऐसा इंडस्ट्रीज में भी था। ओके, अब जिसके पास सत्ता ज्यादा है वो ज्यादा एक्सप्लोइट करेगा, सत्ता कम है कम एक्सप्लोइट करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री टाइप, प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ। बट बाय एंड लार्ज थिंग्स वर नॉट वेरी हेल्दी एंड हैप्पी फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मजदूर है बेचारा, उसको जोत रहे 12-12 घंटा काम कर रहा है, 24 घंटा काम कर रहा है, कमजोर हो गया, हो नहीं रहा तो निकाल दिया, नो कॉम्पनसेशन। कंपनी में कुछ इंसिडेंट हो गया, चोट लग गई, तो डिपेंड करता है, सेठ को लगेगा तो पैसा देगा, नहीं लगेगा तो कुछ नहीं। मर गया तो मेरी बला से, अंधा हो गया तो मेरी बला से, निकालो उसको दूसरा। घोड़ा जब लंगड़ा हो जाए तो वो गोली मार देनी चाहिए, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज थी। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कि इस तरह से कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, दिस एक्ट केम इनटू बीइंग, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। okay. तो ऐसे कौन कौन से कानून बने जो सेफ्टी से रिलेटेड थे? 1948, इंडियन बॉयलर्स एक्ट 1923, फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855, इंडियन डॉक लेबर एक्ट 1934, डॉक वर्कर्स रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948 एंड माइंस एक्ट 1952। जो मेजर है अपने पास, 1948 का फैक्ट्री एक्ट, 1934 का डॉक एक्ट और 1952 माइंस एक्ट। क्योंकि मैक्सिमम इंसिडेंट्स, मैक्सिमम इरेगुलरिटीज आपको फैक्ट्रीज में या माइन में देखने को मिलेगी। ओके, सो ये दो एक्ट बहुत ज्यादा रेफर होते हैं, 1948 का फैक्ट्रीज एक्ट एंड 1952 माइंस एक्ट। और बाकी के जो भी एक्ट है वो सब का भी बेसिक पर्पस था टू रेगुलेट ऑन सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्क। इट्स अ सेंट्रल लेजिस्लेशन एनफोर्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसको इनेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसको पालन करने की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। मतलब जिस किसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट एंड रेगुलेट दिस। ओके, तो जो जितने ऐसे एक्ट्स हैं जिसका एनफोर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, उन सब एक्ट में उस एक्ट के साथ में एक रूल भी होगा जो स्टेट स्पेसिफिक होगा। तो अंजन, आप उत्तराखंड में हो? सर, आई एम इन दिल्ली। You're in Delhi, okay. And Suman? Yes, sir. You are in which state? Sir, I am from Punjab. Currently, I am based in Madhya Pradesh. Okay. So, the assignment of the task for you is, you are in Delhi, you are in Madhya Pradesh. You will try to find out the factories rule for your respective state. Factory rules, sir. Rules, huh? Right. Okay. So, Suman, either you can look for Punjab or you can look for MP, whatever is convenient to you.
I would recommend look for MP Madhya Pradesh because you are operating there. Right. तो लैंड ऑफ द लॉस के हिसाब से वहां का ही आपको पता होना चाहिए. ओके, जैसे व्हेन आई एम ऑपरेटिंग इन गुजरात, इट इज कॉल्ड GFR, गुजरात फैक्ट्रीज रूल. Right. तो सेम वे दिल्ली फैक्ट्री रूल होगा, या यूपी फैक्ट्री रूल होगा, या सेंट्रल फैक्ट्रीज रूल होगा अंजन के एमपी केस में. फैक्ट्री रूल होगा ना सर, मध्य प्रदेश वाइड भी. मध्य प्रदेश फैक्ट्रीज रूल, Right. MPFR. Right. मैं DFR एंड सेंट्रल फैक्ट्री रूल होगा मेरे में. करेक्ट करेक्ट. तो वहाँ आपके बीइंग यूनियन टेरिटरी, इट मे बी आइदर स्टेट स्पेसिफिक और सेंट्रल स्पेसिफिक. ओके, बट देयर विल बी अ रूल. सर पर मुझे एक और एग्जांपल भी सर याद है इस एक एक्ट के अंदर जो अभी आप पढ़ा रहे थे. मैं 2 एक्ट बता रहा, पर मेरे को फिरोजाबाद का भी था सर. एक आपने एयरलाइंस का भी पहले एक एक्ट पढ़ा था सर, कि जब भी कोई कैबिन क्रू फीमेल हायर होती थी या फिर एक एयर होस्टेस हायर होती थी, तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उनसे एक साइन करवाया जाता था कि विद इन 5 years तक वो बेबी वगैरह बॉर्न नहीं कर सकती हैं. तो उसके बाद जब ये गवर्नमेंट तक रूल पहुंचा कि मतलब कि एक फीमेल एम्प्लॉयज के साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है, तब उसके बाद उन्होंने ये बना दिया कि अगर वो करना चाहते हैं, अगर उनको प्लानिंग करनी है आगे अपनी फैमिली प्लानिंग्स, तो आप उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर. वो Perfect. आप बाइंड ही नहीं कर सकते उस चीज के अंदर आप एक फीमेल एम्प्लॉय को. हाँ, पर आप ये है कि आप उनको एज मतलब कि अगर वो दोबारा ज्वाइन करना चाहता है, वो ज्वाइन दोबारा अपनी ड्यूटीज कर सकती है उसके बाद. Perfect, perfect, perfect. यस सर. Okay, so this is all working conditions. मतलब काम करने का जो कंडीशन है ना, उसका रेगुलेट करने के लिए है. जैसे हम बॉन्ड साइन करते हैं, हम कहीं जॉब के उस कंपनी से आपको बोले कि आपको 2 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, 3 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा. Now, as a statute, that bond does not exist, does not have any weightage in the court of law. क्योंकि कानून कहीं ऐसा नहीं बोलते कि आपको बंधुआ मजदूरी करानी है. यस सर. बॉन्ड इज ए बॉन्डेड लेबर. ओके, पर सर So- इंडिया में 2 कंपनीज हैं जो बॉन्ड साइन करवाती है. मैंने जब तक इंटरनेट पर रिसर्च करा था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड जेनपैक्ट इंडिया. ये 2 कंट्री. ऐसे तो बहुत सारी हैं जो आपको बॉन्ड साइन कराती है. ओके, दैट इज it's not on the working condition. It is, sorry, Wipro is also one of it. many there may be many organizations, they might be doing it. Sir, Okay, so isn't it any rule against that? That why being such a huge giant industry sector, they are signing with this bond kind of thing with employees? correct. So the purpose is different. The purpose is, it is not that they want you to be bonded with the organization. है ना, खदान में जाके खोदना नहीं है आपको, इसलिए आपको बांध के रखा है, ऐसा नहीं है. There the purpose or objective is that company spends lot of money training them. फ्रेश किसी को लेके आएंगे जो BCA MCA किया है, उसको अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पता नहीं है, बेसिक उसको पता है कंप्यूटर्स का. विप्रो हायर करेगा, इन्फोसिस हायर करेगा, टाटा कंसल्टेंसी हायर करेगा, कोई भी IT इंडस्ट्री हायर करेगा. दे विल इन्वेस्ट सम टाइम एंड अमाउंट ऑन दैट कैंडिडेट. Right. 6 महीना ट्रेन होने के बाद में वो इन्फोसिस में, टाटा में टाटा छोड़ के, जेनपैक्ट में जेनपैक्ट छोड़ के, कॉग्निट छोड़ के एसेंचर. Right. So to avoid that and to ensure that whatever investment has been made, there is some return on that investment, company insists that you will not leave the organization within stipulated time. And if you want to leave, this is the expense we have made on you. Please repay back and then you can go. So there is also one legal law that even if you don't want to pay a notice period, if you don't want to work, you want to join some other organization, then you can just pay the amount that has been asked as a compensation towards the company, and you can just save yourself from serving the notice period and join another organization by paying that compensation. Is that true? No, Like, there is no rule as such. See, your employment conditions are written in your appointment letter. Right. Appointment letter is an agreement or is a contract between you and your employer. ठीक है. लेकिन सर उसको देख के तो ऐसे लगता है कि वो सारा कुछ एम्प्लॉयर के हक में ही है. लाइक हमारे हाथ ही काट दीजिए. लाइक वी आर काइंड ऑफ ठाकुर इन दैट कि हर एक चीज एम्प्लॉयर के हाथ में, एम्प्लॉयर के हाथ में कुछ है नहीं है. लाइक इफ वी गो थ्रू सम ऑफ द like contracts of organization, that employer has a power.
and employees just has is bound to follow that. Like they don't have such kind of power to like उनको equal power तो नहीं है कि वो छोड़ना चाहे या फिर ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है, एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है, एम्प्लॉयर की तरफ से ऐसा एग्रीमेंट आता है। नहीं मतलब ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप आपकी मर्जी से हैं, आपकी मर्जी से जाएं, आप काम नहीं करेंगे तो सर चलेगा, ऐसा no, नहीं sir, बनाएगा it's ना right. एम्प्लॉयर। No, sir, like I'm not joking. Actually, it is kind of thing. The employers जो है misconduct पे इन चीजों पे आपको फायर कर देगा या कुछ भी है. But on the other hand जो है आपको इस टाइम पे सर्व करना ही करना है. Like I will tell you from the personal experience. Like I was very, I was down and I was hospitalized with the typhoid, severe typhoid. So I was down in health terms and I resigned after 6 months. At 5th month, I told them that I'm severely like this 12-hour shift job is work. I was on field sales, so is impacting my health. So the HR I was working in Chandigarh, and the HR who was based in Delhi, he directly called me and scolded me so badly that company has put so much investment in you, training, everything. You are bound to work or anything. So this is something, sir. That time I was naive. Like it was a first job, so definitely we get scared also. So that time they stretched me from 5 months to 8 months just by giving this threatening thing that okay, you have to work, you have to give because we have invested in you so much. So I only just put one condition that since I have a doctor medical certification and everything, and I have already given you all the specifications, so you just help me with the leave because I was working 30 days without any leave, 12-hour shift, not Saturday, Sunday off. So working, I was completely drained. So is this kind of employment, is it right, sir? Like if we think about the organization, so is it a factor that is like done in other like organizations? That is what I ऐसा said. कुछ All these industries or establishments, they are governed by Factories Act. They are governed by Industrial Establishment Act, that is Model Standing Order. They are governed by ID Act, Industrial Dispute Act. So when you say working condition, you must refer to the 1948. There they explicitly mention what is the maximum working hours. No, Okay. sir. In sales Your- marketing, you know yourself. In sales marketing, there are no working hours. They just expect you to No. be on field What morning time. they expect is something different. What they expect is something different. But nobody is above the law. कानून से So ऊपर कोई नहीं. employee can stand against it, right? Of course, employee can always complain. So that is the point, sir. Like just you said that कि अपनी मर्जी signed है, that is kind of joke. I also took it. But ये जैसे genuinely ऐसा रहता है तो employers sir bully करते हैं तो ऐसा है कि employee has right to report it. Of course, that is the thing. Therefore, these acts are. So, if you refer Factories Act 1948, there is a chapter on leave with wages, working hours, working conditions, holidays, everything. Okay, so anyone who is making you work for continuous 7 days, say upar, it is a non-compliance. Okay. It is a non-compliance. So अगर आप 8वें दिन छुट्टी नहीं देते हैं, तो ये non-compliance है. Okay. For which employer can always be asked. किसी परिस्थिति में ऐसा हुआ कि आपको 8वें दिन छुट्टी नहीं दे पाया, तो within 10 days, under any circumstances, within 10 days, he has to take one off. Okay. After every 20 days of working, you are entitled for one paid leave, earned leave. So all these are the provisions already available in the Act. Only thing, as an employee, we must exercise those acts. Right. See, you can have a tough time. You can have an assignment where you have to work extra hours. Sometimes it's okay because that is the nature of the job. Right. Okay, but then under any circumstances, 24/7, you have to work. It is only in defense. But there also, in case of emergency, people who are on warship, people who are in Navy ship, they also don't work 24/7, though they are at the ship. The Right. duty is 8 hours, 5 hours, 10 hours. Every 10 hours, ship will change. Some other will inspect, some other will do the job.
In emergency, yes, you are working 24/7 because the conditions are such. But under normal circumstances, everything is governed by this act. Got it. है ना? So leave with wages is a chapter which talks about working hours. 48 hours a week. That is the maximum you can work. In a quarter, 100 hours or 150 hours is the maximum overtime that you can do. That too with permission. You have to take a permission from the local labor inspector or factory inspector of your region or district magistrate if there is no such person available, GLO, ALO, for overtime. And that too there is a limit. Sir, the people who are carrying out manual work, or like the people who are also doing office sitting work, like who are in sitting like HR or any kind, or who are on field work, who are eligible for this kind of permission to get Interesting overtime question. work. Interesting question. So I suggest you should read Factories Act. Right. sir. In that act, who is workman is defined. Okay. Right. So whether it is HR, whether it is finance, whether it is an air hostess, whether it is a cabin crew, all cabin crew are workmen by the nature of their job. Right. sir. है ना? फ्लाइट में जितने भी लड़कियां या लड़के जो केबिन क्रू की तरह काम करते हैं, they all are workmen. But the flight captain is not a workman. Right. Okay. So anyone who is interested, the responsibility to supervise, to administer, to control, to order, they are not workmen. Other than that, everybody is a workman by nature of job. Okay. And any workman can approach any labor organization for their rights. आपने पढ़ा हो या सुना हो मुझे पता नहीं, but in Bangalore, one IT company, there are people who formed a union. And they went to the labor court in Bangalore. An IT company, the people working in IT company, they formed a union and went for the strike. Okay, now they are not labor, na? By nature of, if you see the status, the work, Right. you won't compare or you won't consider them as a labor. But as per the Right. definition, they all are workmen. Workmen can do this. Right. Okay. So these acts are very strong, very well defined. You should know your own rights. Okay. And as an HR, you must know, because it becomes a compliance matter for you to implement. आप किसी ऐसी कंपनी में अगर एचआर में हैं तो वहां आपकी जिम्मेदारी बनती है ये सब चीजें ना हो, ये सब चीजें होते अटकाना. That is the responsibility. Okay, so you must understand these acts. So this act was implemented in 1949, 1st April it was enforced. Okay, then it has 120 provisions in 11 chapters. तो 11 अलग-अलग चैप्टर है इस एक्ट में, उसमें 120 प्रोविजंस है, प्रोविजंस या क्लॉजेस या सेक्शन. So 120 sections in 11 chapters. Chapter on health, chapter on safety, chapter on working condition, general enactment, and then punishment, annexures, everything. Okay, it is extended to whole of the India and applicable to premises which comes under the definition of factory. अब फैक्ट्री किसको बोलते हैं उसका डेफिनेशन भी इसमें दिया है. ओके, तो कल उठ के आप अगर आपके घर में पापड़ बेल रहे हैं, 30-35 लोग आपने रख लिए, घर में ही चकला बेलन लगा के आपने पापड़ बनाना शुरू कर दिया और बेच रहे हैं, कमर्शियल. Right. So your house can also be a factory.
So, sir, we have to register it under government to carry out the You have to, practice. you have to take a license. It's called factory license. You have And to sir, apply if for a a single license. person, if a single person is running a business on their own, carrying out multiple functions, because we come across many of the startups right now. So, single person or a husband, wife are carrying out it from their home. So, they also need to get registered under government to run that kind of practice. Now, when you say startup, these startups are registered under the MSMEs, Right, sir. medium and small and medium industries. Hmm. Okay. Now, what is a factory? So factory is a that's premise. So factory is a premise where 10 or more workers are doing manufacturing process with the help of power, or 20 or more people carrying out a manufacturing process without power. So as I said कि आपके यहाँ 25 लोग 25 महिलाएं बैठ के चकला बेलन पे पापड़ बेलती हैं. right. बाहर एक बड़ा सा आंगन है, उसमें आप सुखाते हो, फिर सूख जाता है तो पैकिंग करके बेच देते हो. Right. Okay. So as per this definition, whether it makes a factory? Yes, Why? because there are multiple women working and selling out the product, right? So, So when we say multiple, the number is defined. right. है ना? 20. And this says on any day preceding 12 months. मतलब पिछले 12 महीने में अगर एक भी दिन ऐसा आया है जब आपके यहाँ 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, whether it is power or without power, then that premise is called factory. If it is, Manufacturing. I mean, 20, sir. Minimum number is 20. Correct. So in the act, this is the number defined, 10 or 20, with power or without power. When we say power, it is आपको बिजली सीधे मिल रही हो, आप बिजली चला के काम कर रहे हैं, आप गैस लाइटर चला के काम कर रहे हो, आपने डिबरी लगाया है, कोई भी. By any means, if you are using equipment or machinery, which is operated by electricity, by fuel, by diesel, by genset, furnace, steam, anything. किसी भी तरह से अगर पावर जनरेट हो रहा है, कोई मशीनरी आप यूज कर रहे हैं और 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, देन इट इज अ फैक्ट्री. या 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां, लेकिन पावर का सप्लाई नहीं यूज कर रहे हैं, बट आप हाथ से काम कर रहे हैं, और वो जो एक्टिविटी है, दैट एक्टिविटी कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देन दैट प्रीमाइस इज कॉल्ड फैक्ट्री. I have a doubt, sir. हाँ. Sir, आप बोल रहे हैं like it is if the power is used, like a power is used while doing that practice, then only it is called factory. अगर पावर कंजम्पशन हो रही है, 10 से 20 लोग जो है काम कर रहे हैं वहां पे और पावर यूज हो रही है, पावर मीन्स सर मैन पावर या इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी. मशीन चलाने के लिए आपको जो भी ऊर्जा लग रही है, आप चाहे बिजली, स्टेट गवर्नमेंट की बिजली यूज कर रहे हो, आपने डीजी सेट लगा रखे हैं, बिजली कनेक्शन नहीं मिला तो आपने जनरेटर लगा दिया, उससे आप बिजली पैदा करके मशीन चला रहे हैं, आपने बॉयलर लगा रखा है, स्टीम बन रही है, उससे मशीन चल रही है. इन एनी फॉर्म. अगर ऐसे ही सर, अगर जैसे लिज्जत पापड़ वाले लेडीज का एग्जांपल है, वो तो बेचारी ले ही नहीं रही थी, वो तो घर पे बना बना के पापड़ बेचे. दे माइट हैव रजिस्टर्ड इट लेटर, बट ड्यूरिंग द स्टार्टअप टाइम तो देयर वर मल्टीपल वुमेन, बट उन्होंने तो धूप में पापड़ सिखाए, घर पे बनाए, तो वो भी फिर फैक्ट्री सेटअप में सर आप आपके घर पे बैठ के बनाओगे, बेचोगे, तो वो फैक्ट्री नहीं है. लेकिन आपके प्रीमाइस में 10 लोग आके बना रहे हैं, 20 लोग आके बना रहे हैं, then your premise can be termed as a factory. However, the power is consumed or not, but people are involved. If there are people employed, अगर 20 लोग हैं या उससे ज्यादा हैं, तो whether you are using power or not, if it is a manufacturing process, it is a factory. If it is with power, then the number is 10 people. कई बार जो respective स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, दे विल ऑल्सो इम्पोज. 5 लोग भी काम कर रहे हैं लेकिन वो फैक्ट्री है,
जैसे वो फैजाबाद में चूड़ियां बनाने का कारखाना है, जी। अब हर घर में बन रहा होगा सपोज, वो शीशा पिघला के, मतलब आयरन, ये अपना कांच पिघला के उससे चूड़ी बनाना, ये हर घर घर में हो रहा होगा. तो इन दैट केस इफ द एडमिनिस्ट्रेशन फील्स, they may declare every house as a factory because of the nature of the job. You are generating employment, you have hired people, you are paying them and you are earning profit. और जो एक्टिविटी है, it is a part of manufacturing process. आप बना रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, anything comes under manufacturing. So when you read this act, in this act there are annexures, schedule, okay, that defines what is manufacturing process. तो खाली Sir, बनाना last ही नहीं. doubt, a single last doubt. Then, like. No, we why can last? carry- There can be other also. Sir, because it is like about to end the time, so I've been asking many questions since I have not No worries. done Perfectly all last right. of your lecture. So the thing is, like, there are many organizations. Some are institutions, study institutions. Some are factories. Some are the MSMEs, just you said. So if there is some kind of thing, like they know that the rule is over 10 people, it has to be registered under government. Otherwise, it is punishable. So they can take the help of 9 people, right? So then also, like, they are witfully doing that. Like 9 people are Correct. working. Correct. So in their case, the act empowers state government to declare that premise as a factory, even if there are 9 people. Okay, but they are running in full capacity. अगर जानबूझ के कर रहे हैं, और वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का संज्ञान लेता है कि ये जस्ट टू अवॉइड द compliance part, they are making it with 9 people. ये 9 लोग 14 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, इससे उनको मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री की कैटेगरी से बचने के लिए इन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है. इन दैट केस द स्टेट गवर्नमेंट हैज दैट राइट टू डिक्लेयर दैट प्रीमाइस एज ए फैक्ट्री. The act empowers state government to declare all or any of the provision of the act to apply to any place with an objective to secure safety, health and welfare of workmen, even though the worker's strength is less than the above cited condition. All right. And so one more अगर thing, like, 10 हाँ, study institutions हैं या ये चीजें हैं सर, इनके लिए सबके लिए फैक्ट्रीज और लॉज जो एप्लीकेबल. एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेबल है, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट. And sir, this one register you mentioned, that was labor register or which register? लीगल रजिस्टर. Legal register. So we Legal have to register. read about legal register, factory rules of MP. Yes. Right, sir. And sir, there is some personal question. For example, I am planning to run a business on a household level where I am planning to take, sell and resell some of the things that will be innovative by me, but on a simpler level, till I get the manpower and I can open some shop or anything kind of thing. So does it require any kind of registration to the government or anything? If I am starting on a very basic scale right now, sir, how long it? अभी आप आपके घर में केक बनाते हो, जी ठीक है, आप आपके घर में केक बना के बेचते हो, जी, एक हॉबी था, देन यू कन्वर्टेड इनटू अ अर्निंग. प्रोफेशन. तो रोज का 2-3 ऑर्डर मिलता है, आप बनाते हो, बेच देते हो, जी जी ठीक है. इसके लिए आपको कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है, जी. इसके लिए आपको किसी का अप्रूवल का जरूरत नहीं है. अगर इससे जो मेरे अर्निंग पास- आ रही है, इससे जो अर्निंग आ रही है, अगर वो पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में है, जी चेक से आ रहा है, अकाउंट में आ रहा है, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी है. जी 200-250 रुपया, 400 रुपया, 1000 रुपया केक अगर आप बना के बेच रहे हो, सपोज रोज का 2 केक 2000 रुपया, महीने का 30 दिन, 2000 रुपीज पर डे, 60,000 रुपीज इन इनकम, 8,000. जी ठीक है. तो ये 60,000 रुपया आपको अगर दिखाना है, if you are showing this as an income, you are liable for tax payment. That is income tax act applicable. No factory act, no shop and establishment, nothing. और यही चीज आपका अगर सर मैं केक बैंकर. बहुत अच्छा बनता है, आपका केक बहुत अच्छा बनता है, लोगों ने बहुत तारीफ किया. मतलब जो भी
जिसने भी ट्राई किया उसको अच्छा लगा, एंड देन देयर आर रिपीट ऑर्डर्स, देन देयर इज अ वर्ड ऑफ माउथ. जी. Okay, so gradually your order increased to 5 cakes per day. Right, sir. You are able to manage on your own. आप Right. घर में कर लेते. So no permissions required. Still, when you are making this 5 cakes per day, it's spread. Okay, so suppose आप भोपाल में हैं, आप किसी एक जगह पे अभी थे, then from different areas of the Bhopal people come to know. सोशल मीडिया पे आपने पोस्टिंग डाल दिया. Now you have order of 20-25 cakes per day. ठीक है. अब ये आपसे अकेले से मैनेज नहीं होगा. जी. आप घर में सब जगह तो ओवन रखेंगे नहीं. जी. तो दो तरह हो सकते हैं. एक हो सकता है कि आप आपने अपने कुछ फ्रेंड्स है, सहेली है, उनको बोला कि भाई मेरे को ऐसा 25 केक का ऑर्डर मिला है, तो उसमें से 5 केक तुम बना दो. जी. ठीक है. और जो भी प्राइस होगा 1000 रुपए है, तो उसमें से 800 रुपए तुम रखना, 200 रुपए में प्रॉफिट है. So you outsource. Right. Still no factory license, no shop registration लगेगा. ये सब घर में काम चल रहा है. 3-4 लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया, आपने उसको जो भी ऑर्डर आता है आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. तुम केक बनाओ, डिलीवरी दे देना, 200 रुपया पर केक मेरा, पर केजी. Okay, so you have developed a different model. Now, Right. all these 5 of you, आप 4-5 जन मिलके, आप इंडिविजुअली 200 केक का ऑर्डर आने लगा. जी. And now you think that अब ये घर से मैनेज नहीं होगा, तो हमको एक केक शॉप डालना पड़ेगा. I will have to have a bakery. The moment you start a bakery, it becomes a factory. Okay. In the beginning, आप 5 लोग हैं, 250-250 केक बना रहे हैं, चीजें चल रही हैं, but the setup is manufacturing process with power. क्योंकि केक के ओवन लगेगा, भट्टी लगेगा, माइक्रोवेव लगेगा. ओके, सो 5 या 6 लोग with power doing a manufacturing process. Okay, it's a profit earning also. So though the number of people are less, it can be a factory. On the other hand, sir, if I am a single person, but I am having a lot of contacts with vendors, so what is like I am a face to other people, and I am, for example, selling some festival hampers. You are trading. You are trading. Yes, I'm trading. I am the person, like I have a lot of vendors, but I am a face. So I am sending and selling that business to personal contact groups and everything on social media. And I'm also flashing an ad on some of the digital platforms like, Instagram or Facebook. So, sir, if I'm a single person who has lot of vendors over here, so can I use my, brand name that is yet to be registered, because I am just starting. I just want people to show that I have just started the organization, but I am a single person. So does that single person who is still working as a consumer from the other vendors, I'm buying and I'm not sure that that will be sold. So do I have to register myself as a business in the start under MSME also? Now, हम HR से थोड़ा बाहर दूसरे टॉपिक पे चले गए. जी. Whatever I want to do, I can do. Whatever I want to do as an individual, I can always do. Young Skill India, for that matter, is one such activity where I am trading knowledge. I am educating. Byju's, for that matter, they are educating people. 50 teachers working for Byju in one center. As per definition, it is either factory or an establishment. So either they are governed by Factories Act, if it is a manufacturing process. Since education is not a manufacturing process, it is a service industry, they are governed by Shop and Establishment Act. Yes. At your home, if you are taking tuition Yes. with your own name, Suman classes, Yes. social media पे उसका ad चल रहा है, okay, then you are not governed by any such act. The only act applicable is Income Tax Act. अगर मैं अपने एक आईडी या कुछ आइडेंटिटी भी आप कुछ भी, anything, whether it is with ID or without ID, रजिस्ट्रेशन का जरूरत पड़ेगा आपको अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो. When you are manufacturing cake and supplying and selling in retail,
मेरी बच्ची का बर्थडे है, मैं आपके आया, मैंने आपसे केक लिया, आपकी कंपनी का ब्रांड है या नहीं है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई डोंट नीड दैट बिल, आई डोंट वांट टू रीइंबर्समेंट। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री में कोई इवेंट है, वो आपको ऑर्डर देते हैं और वो आपको बोलते हैं कि भाई आप केक दे दो, साथ में बिल चाहिए, फॉर दैट बिल दे नीड समथिंग, और फॉर दैट bill you also need something, then you need to register. आप सुमन केक शॉप GST for example, and then GST you number register it. and all. When you register it, you register with local nagarpalika that this is the premise that I am using for this particular activity. It's a commercial activity. Yeah, I am doing from home because this is a compliance requirement for someone else. आपको mandate नहीं है, लेकिन आप उस premise को use कर रहे हैं as a commercial premise. Therefore, you need to register with local municipality, but not in Factories Act, not in Shop and Establishment Act. Right. For your own earning, you have to manage it in some way. Therefore, you are doing it. As such, it does not call for any registration, any licensing. Okay. But yes, if there are 10, 15 people working together, though it's a cake manufacturing process, it becomes a factory, and then all other compliances are applicable. Right. Got the point. So thank you so Clear? much. So you can start your own. There is no factory license required. Right. So got the point. So that is where, because you said that if I have 10 or 9 people working under, so that is a production unit. So definitely it will be called factory. But if we are giving Correct. services, that If are it is just service, working- if it is a service industry, you have to refer Shops and Establishment Act. उसमें भी यही नंबर है। Wait. कपड़े की दुकान जो है ना, बड़ा सा शोरूम खुला है, that is also governed by Shops and Establishment Act. Right. सलून जहाँ दाढ़ी बनते हैं, आप पार्लर जाते हो, governed by जी. Shops and Establishment Act. Right. है ना? Got the point. Thank you. This statement. Now this act talks about various definitions. Okay, as I was talking, by workman मतलब कौन? As per Factory Act, everybody is a workman. As per Factories Act, everybody is a workman. Anjan, you are there? Yeah. Yes, sir, I am there. Okay. So as per Factories Act, everybody is a worker. Everybody. You are a workman. The boss is a workman. जो workman है वो भी workman है. चपरासी वो भी workman है. Everybody is a workman, except the one who is designated as factory manager या occupier. मतलब या तो मालिक है वो, या मालिक ने जिसको बताया कि ये मालिक की जगह पे काम करेंगे. उसके अलावा बाकी सब वर्कमैन है बाय द नेचर ऑफ देयर जॉब. Okay. So if I am not authorized for anything and my job description includes only execution, I can't supervise, I can't direct, I can't inform, but जो काम दिया है वही मुझे करना है. तो मेरी कुछ भी एज हो, कोई भी एज हो, I am by definition I am a workman. So worker means a person employed directly or through any agency. This is contracting या subcontracting. With or without the knowledge of the principal employer. मालिक को पता है या नहीं है. Whether for remuneration or not. पैसा दे के या फ्री में. In any manufacturing process or any kind of work incidental to. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या ऐसे काम में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई है या उसके जैसी है, उसमें काम करने वाला हर आदमी वर्कर है. मालिक को पता है या नहीं पता है, पैसा लेके काम कर रहा है या बिना पैसे के काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जुड़ा है, सीधे तौर पे जुड़ा है या अल्टरनेटिवली जुड़ा है. मतलब बना नहीं रहा है लेकिन बने हुए माल को पैकिंग करके डिस्पैच कर रहा है, बना नहीं रहा है, पैक नहीं कर रहा है लेकिन डिस्पैच कर रहा है, रॉ मटेरियल को इधर से उठा के उधर रख रहा है. ऑल दीज activities are connected with either manufacturing process or are actually manufacturing process. कांच को भट्टी में गर्म कर रहा है, इट्स ए पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. भले उसमें मोल्ड में डाल के उसकी चूड़ी नहीं बना रहा है,
या बनने के बाद में उसको निकाल के बाहर रखता है सुखाने के लिए, या मोल्ड से निकाल के ऑर्गेनाइज करता है. इट्स ए पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. So any person who is employed directly or through any agency, including a contractor, with or without the knowledge of principal employer, whether for remuneration, पैसे के लिए, or not, in any manufacturing process or in any kind of work incidental to or connected with the manufacturing process, is a worker. Okay. इसके अलावा बाकी का जो definitions है, as I said, occupier and factory manager. For this, you read the Act 1948. Try to find out who is occupier, who is the factory manager. Okay. So these are the various definitions. There are other also. I think we'll not be able to complete it in today's session. We'll have it next week, because I think tomorrow ma'am will conduct. So next Saturday, Sunday, whatever will be the schedule, we'll take it further. But meanwhile, you will go through the factory's rule of your respective state, chapter wise. Try to extract information of each chapter. I'll be very happy if you can have a presentation format. Yes, दो sir. तीन slide, Yes, sir. Definitely. है ना? So बहुत लंबा डिटेल नहीं होगा तो चलेगा, क्रिस्प होगा तो चलेगा. But you read this act and rule. Rule will always have a specifications. Yes. है ना? Act is generic. Rule will be specific. मतलब act क्या बोलता है? 10 लोग बिना पावर के, 10 people with power, 20 people without power. That is act. But आपका specific rule अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा हो सकता है कि लिखा हो 5 लोग with power and 15 लोग without power. या 20 लोग with power, 30 people without power. कोई ऐसा एरिया है जहां पे ज्यादा गृह उद्योग ज्यादा प्रचलित है, तो वहां पे कम लोग इकट्ठा होकर भी धंधा करते होंगे, तो हो सकता है उस प्रीमाइस को लोग फैक्ट्री डिक्लेयर करें. ओके, कहीं ऐसा होगा जहां एक या दो आदमी ही करते होंगे, या बहुत सारे लोग मिलके काम ऐसा करते हैं जो फैक्ट्री जैसा है, तो वहां 50 लोग इकट्ठा होकर भी एक फैक्ट्री प्रीमाइस बन सकता है ना? सो योर रूल विल बी स्पेसिफिक, एक्ट इज जेनरिक. इसमें 10 है, आप बताओगे आपके रूल में कितने लोगों को फैक्ट्री बताया है, कितने लोग होंगे तो आपको एक हेल्थ ऑफिसर लेना चाहिए, कितने लोग होंगे तो आपको एक वेलफेयर ऑफिसर लेना चाहिए, कितने लोगों के बीच में कितने यूनियनल होने चाहिए, कितने लोगों के बीच में कितने स्पिटन होने चाहिए, कितने लोगों के बीच में कितना पानी पीने का अरेंजमेंट होना चाहिए. ऑल दिस थिंग्स विल बी अवेलेबल इन द रूल्स. तो आप जब उसको पढ़ोगे तो आपके स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे. आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो दीज स्पेसिफिकेशंस as per the rule of that particular area. So that 1 or 2 slides covering maximum input. Okay, I'll say that you read chapter 3 of the act. Chapter 4, if you can, not very mandatory as of now. Chapter 5. Chapter 6. सुमन, आप इसको पढ़ोगे ना तो आपका जो क्वेश्चन था 12 घंटे काम कराए, 24 घंटे काम कराते थे, उसके आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे. सर अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते ना. नहीं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट क्या कर सकते थे.
Okay, so chapter 3, chapter 5, chapter 6. जी 7, okay, you can. Chapter 8, section 79. So 3, 5, 6. ये खास चैप्टर नंबर 3, 5 और 6 खास करके, बाकी के अगर आप पढ़ सकते हैं और उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, नथिंग बेटर देन दैट. एंड देन these 3 schedules. Schedule are nothing but the annexures. List of industries involving hazardous processes. Permissible level of certain chemical substances in the work environment. List of notifiable diseases. और कौन-कौन से फॉर्म उसमें एप्लीकेबल है, क्या-क्या रिटर्न भरना है, वगैरह वगैरह. So if you can go through this rules, 3-4 slide presentation on the Factories Act 1948 state rules, and then we can discuss and try to understand how this act is applicable. That will help you to define certain policies also, because a lot of information you will get from this. तो कितना छुट्टी देना चाहिए, कितना PL हो सकता है, कितना SL हो सकता है, CL हो सकता है. For all these things, this act will help. है ना? Okay. right. So that we'll discuss in upcoming classes. How about connecting on weekdays other than Saturday, Sunday? अगर बीच में कभी connect करना है तो कर सकते हैं फ्राइडे के बीच में. कर सकते हैं. सर मेरी 4 बजे से लेके 11 बजे तक शाम को रहती है क्लासेस, तो इन 4 से वर्किंग 11. डे शाम के 4 से 11 तक सेशन रहते हैं, मेरे ट्रेनिंग सेशन रहते हैं. तो मेरे पास संडे मॉर्निंग. जी हाँ सर, संडे मॉर्निंग है ना, अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ता है तो अपन संडे मॉर्निंग रख सकते हैं क्लास. सैटरडे संडे मॉर्निंग दोनों टाइम भी सर कर सकते हैं. अंजन हाँ. सर इज आल्सो अग्रीइंग, सो वी कैन फिनिश इट ऑफ. व्हाई टू stretch it if we have weekend plans, so why to stretch it for that? Morning में कर सकते हैं सर, early morning. Not tomorrow, but next weekend. जी. Saturday evening and Sunday morning we can plan. Okay. I'll let you know. We'll put up in the group also so that others can also join. If at all we reschedule. If it is convenient to you, we can have it. सर HR एनालिटिक्स का पोर्शन भी सर आप ही कवर करेंगे ना सर? जो कौन सा? HR एनालिटिक्स का जो पार्ट है पूरा. Yes. अगर आपको अच्छा लगता है मेरे से पढ़ना तो मैं कहूँ. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सब फैकल्टीज बेस्ट है सर. ऐसा कुछ नहीं है. There are 2 topics. This is labor law and HR analytics that I'll prefer to take. Other topics ma'am conducts. आपका जो भी सवाल है, I'm very happy that we have a lot of interaction today. Like Anjan started with income tax ka questions, and then Suman also came up with various issues that she also faced in her employment, and the role clarity. So it is good to have an interaction that gives us more insight of the topic and subject. अगर आप presentation वगैरह बना के लाएंगे तो it will also help you only to understand that act in detail. Right. Done. So we call it a day for today. Right. Thank you sir. Thank Okay, you, sir. I'll put up this presentation on the group, these slides, whatever we covered. Yes sir. Okay, that will help. Thank you sir. Sir, see you. Yeah, bye-bye.